So today we are going to start with the variable and its scope. Okay, variable and its scope. Variable defined inside a method is called as the local variable. It is called as the automatic, temporary, or stack variable. So let me show you which one is called as the local variable. Local variable आप किसको बोलेंगे? Suppose if I define a method, void show function. When I define a method void show function, in that function if I define any variable, so it is called as the local variable. It is called as the local variable. Local variable means the variable value is only limited within its scope. Okay, it means what? The variable value is limited within the scope. मतलब ये जो variable आप define कर रहे हो ये सिर्फ इसी स्कोप के अंदर में रहेगा. ये है आपका लोकल वेरिएबल. मतलब ये जो वेरिएबल को आप अगर आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक और आउटसाइड ऑफ द सपोज एक क्लास में और एक क्लास मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ. सपोज क्लास XYZ, then I define another function void display function. तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है. अगर मैं ये जो वेरिएबल int ये जो है अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा a=6 ऐसा कुछ अगर लिखूंगा तो ये आपका एक्सेस नहीं हो सकता है. सो इट इज शोइंग यू एन एरर. यहाँ पर एरर शो करेगा आज बिकॉज जो int ये वेरिएबल है दैट वेरिएबल इज ओनली डिफाइन इनसाइड द शो फंक्शन. ये शो फंक्शन में ही सिर्फ डिफाइन किया गया है. उसको मैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इसको कॉल नहीं कर सकता. इफ आई वांट टू कॉल इनटू आउटसाइड ऑफ द फंक्शन तो इट शोज एन एरर. ओके, तो लोकल वेरिएबल स्कोप इज लिमिटेड विद इन द फंक्शन. जो फंक्शन में वो डिफाइन होगा वही फंक्शन में वो एक्सेस होगा. सो यू कैनॉट एक्सेस दैट वेरिएबल वैल्यू outside of the function. So that is the work of local variable. Apart from that local variable, if you define other variable outside of the method, then it is called as the member variable. तो यहाँ पर suppose मैंने define किया int b c, तो ये जो variable है इसको बोलते हैं member variable. That means that variable can access anywhere in the class. तो क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन में और किसी जगह पर वो एक्सेस हो सकता है. So that it is called as the member variable. So member variable access anywhere. Local variable value is access only within that function. Understand? No, sir. Please repeat. Okay. The variable is a two type. Okay. तो variable दो तरीका का होता है. एक है लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल का काम क्या है ना? लोकल वेरिएबल सिर्फ आपका फंक्शन में ही डिफाइन होगा. मतलब मैं एक यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ void show फंक्शन. इस फंक्शन के अंदर आपका लोकल वेरिएबल डिफाइन होगा. अगर मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ int ये, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है
इस ब्लॉक के अंदर, मतलब ये जो ब्लॉक है ना मेथड का ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर आप यूज कर सकते हो। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दैट वेरिएबल, अगर ए वेरिएबल को मैं दूसरा जगह पर एक्सेस करना चाहता हूं तो आई कैनॉट एक्सेस इट। हाँ, लोकल, देखो सम वेरिएबल, व्हाई यू आर यूजिंग लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल हम क्या जो किस लिए यूज करेंगे, कुछ फंक्शनैलिटी, जब क्या होता है ना, जब ब्लूटूथ, सपोज आप एक मान लो ब्लूटूथ है, सपोज एक हो गया आपका वाईफाई है, तो ब्लूटूथ और वाईफाई में कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो उसमें ही कॉमन है, मतलब वाईफाई में कॉमन है, वाईफाई में वो स्पेशल है, और कुछ वैल्यू ऐसा होगा ब्लूटूथ का, वो कॉमन है। ओके, ब्लूटूथ क्या करेगा, डिवाइस के साथ कनेक्टेड करेगा और आप डाटा शेयरिंग करोगे, तो एक चीज है। और वाईफाई में क्या है, हम इंटरनेट कनेक्शन करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू में। तो ये जो दोनों में क्या है, दोनों का काम डिफरेंट है। इस दोनों का फंक्शनैलिटी को स्टोर करने के लिए हमको वैल्यू चाहिए। तो ब्लूटूथ का फंक्शनैलिटी का वैल्यू अलग है, वाईफाई का फंक्शनैलिटी का वैल्यू अलग है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हर एक फंक्शन का एक अलग अलग वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर फैजल? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट अंकिता बुझिएला। आज्ञा सर बुझेला। And when you define the local variable int a, ओके, तो आप अगर ये जो वेरिएबल int a डिफाइन करोगे, तो ये जो a वेरिएबल है आप दूसरा फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हो, इस फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज हाँ, यू लिसन फ्रॉम, हाँ okay, so now when you define a int a variable, it is called as a local variable, and this local variable is only access within that particular function। अगर a variable को हम दूसरा फंक्शन में एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, इट शोज एन एरर, so that is a problem। and if you define the variable outside of the method, मेथड के बाहर जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, so that is called as your member variable। clear? Yes sir. Okay, so member variable can access anywhere, it can be accessed in the show function, it can access the display function, it is accessed anywhere in the class, but this member variable is of two types। one is instance variable, another is static variable। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, सपोज when you are booking a seat for a cinema hall, so your seat is booked for the specific timing, either 12 to 3 or 3 to 6 you are booked। so after the cinema is over, then you are not having any kind of authenticity to sit over there, मतलब वहां पर आप और बैठ नहीं सकते हो, बिकॉज it is only valid that seat for the particular time period। then when your show is over,
then that seat is allocated to the other person. Okay, same 3 to 6, आप जो सीट में बैठ रहे हो, सपोज कोई दूसरा लोग को वो सीट दिया गया होगा. And some seats are there which is always fixed. जो प्रोजेक्शन का रूम का जो सीट है दैट इज फिक्स, मतलब जहां पर टेलीकास्ट होता है आपका मूवी का जो स्क्रीन जहां पर आता है, तो वहां पर कोई आदमी बैठ नहीं सकता है. तो दैट मीन्स व्हाट, दैट स्क्रीन प्लेस इज ऑलवेज फिक्स. आप आज जाओ, काल जाओ, परसों जाओ, एक साल के बाद जाओ वो सिनेमा हॉल, तो वो स्क्रीन वहीं पर ही प्रेजेंट होगा. दैट मीन्स व्हाट, दैट value is called as what, you can call as it is a static. So when you define the variable inside a class, that means that variable is of two types. One is static variable, another is instance variable. So which one is the instance variable? So like you can say int b and c is called as the instance variable. And which one is a static variable? If you define a variable with the static keyword like static x, static int x and y. So when you define a variable with the static keyword, then it is called as the static variable. जो variable को आप static define करोगे वो variable आपका static variable है. जो variable is defined without any kind of keyword, then it is called as what, instance variable. Why it is called as an instance variable? Instance variable value is exist as long as your object is exist. जब तक आपका क्लास का ऑब्जेक्ट वैलिड है तब तक वो वैल्यू आपको शो करेगा. एंड फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा वैल्यू आएगा. ओके, सो यू कैन से हियर int b and c. Now if I pass the value here int x, so a is a member variable, a is equals to x. The display, in display I have passed here again int y. So here I define int y, so a equals to y. Then now I call here main method. Suppose public static void main string args. अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक्स वाई जेड आई इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई जेड. देन if I pass here this is one object. When I pass I dot suppose show function, then I am passing here 20. When I create another object, तो 20, तो x में 20 स्टोर होगा, a में यहाँ पर 20 शो करेगा. सपोज अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा system dot out dot println, if I print here a, so it is printing me 20. If I write here xyz j equals to new xyz,
then j dot display function. Now here I pass the value 30. तो यहां पर देखो, जब मैं xyz i ऑब्जेक्ट बनाता हूं, i डॉट शो फंक्शन करने से 20 जाकर इनिशियलाइजेशन होगा a में। फिर xyz j, फिर और एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ए डिस्प्ले को भी मैं हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक फंक्शन यूज करता हूं, i डॉट j डॉट शो फंक्शन। जब मैं j ऑब्जेक्ट से शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहां पर मुझे दिखाएगा 30। तो सेम वेरिएबल वैल्यू, बट वैल्यू इज चेंजेस व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आप जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, then based upon that your value is also changes. I dot show, it is showing you 20, और जब मैं j ऑब्जेक्ट बना रहा हूं j डॉट शो, the value is changes to the 30. Okay, so value is changes when you are creating a new object, but it is not happen in the static keyword. In a metro city, normally we hire the taxi. Okay, if you are going to the Kolkata, you are having a taxi, or in your movie also you see the taxi. और टैक्सी में क्या होता है, सपोज आप एक टैक्सी को हायर करते हो तो उसका एक मीटर होता है, तो मीटर डाउन करते हो, तो मीटर डाउन करने से वो 0 हो जाएगा। देन यू आर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन, फिर जो मीटर आएगा बेस्ड अपॉन दैट किलोमीटर यू आर पेइंग द मनी। ओके, देन वही जगह पर कोई दूसरा आदमी बैठेगा, फिर उसको 0 कर देगा, सो 0 होता है, फिर से वो काउंट होता है। बट 1 मीटर दैट इज प्रेजेंट इन अ व्हीकल, दैट नॉट एवरी टाइम रीसेट टू 0। जो गाड़ी का परमानेंट मीटर होता है, जिसको देखकर गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, वो कभी बार बार चेंजेस नहीं होता है। ओके, इट इज फिक्स। फ्रॉम दैट मीटर वी गो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। बट जो आपका मीटर होता है, जो इट इज कैलकुलेटिंग व्हाट योर डिस्टेंस, एंड थ्रू दैट डिस्टेंस यू आर गिविंग ए पेमेंट, वो एवरी टाइम चेंजेस होता रहता है। सो दैट you can say it is called as the what, it is a static meter, means which is fixed. So your variable is of two type, one is instance variable, another is static variable. Got it, or any doubt? Yes, sir. Bujala. Faijan, Abhishek? अभिषेक बुझिएला? हेलो? अंकिता? Sir, Mona siye. सब हम नुआ पड़ा अंकिता को। ये सब बुझेला। Okay, so now I will show the program, which is again clarify you, and it is what clearly I am describing actually what is the need for static and instance. Okay, so I show the example, then I will give you in practical sector how it is implemented. Okay, so practical field में ये जो static का काम actually क्या है, कब आप static यूज करोगे, जब आपका एक प्रोग्राम आएगा। So first let me show you the program, then I will tell you in which field, basically in which practical field we're using this program.
Now public static ex, it is a class name. Then here I define static int count. So here I define a variable as count. Okay, static int count. I make this variable as what? I can say it is a. I make this variable as first I remove it. First I define is static. Then here you can say it is a constructor. तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर क्लास का नाम है स्टैटिक ईएक्स और यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर है स्टैटिक ईएक्स. क्लास का नाम हो गया स्टैटिक ईएक्स एंड कंस्ट्रक्टर हो गया स्टैटिक ईएक्स. ओके, देन एक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल को मैंने स्टैटिक डिफाइन किया. So when the constructor is called, the constructor is called at the time of class object is created. So when you are creating a class object, at that timing the constructor is called. Okay, so when you are creating a object of class, at that timing the constructor is called. Okay, so when constructor is called, then what it does, it is increment the value of the count. मतलब आपका जो काउंट वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करेगा. कितना इंक्रीमेंट करेगा? ना एक इंक्रीमेंट करेगा. यू नो दैट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0. अगर इंटीजर में आप कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करते हो तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0. तो 0 कहाँ पर स्टोर होगा? ना यहाँ पर स्टोर है, तो 0 + 1 1, तो मेरा काउंट में 1 स्टोर हो गया. अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई डॉट काउंट, देन मुझे यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा. Then I am creating another object. As you know that when you are creating another object, the variable value is reinitialized. मेरा वेरिएबल में कितना वैल्यू स्टोर हुआ है? 1 स्टोर हुआ है. अभी मैं जब और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और अगेन व्हेन आई क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, दैट मींस व्हाट? इट इज अगेन रीइनिशियलाइज. वो रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 0 से काउंट करेगा. लेकिन यहाँ पर स्टैटिक है तो यहाँ पर रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा. तो आपका काउंट का वैल्यू 1 है. फिर दूसरे बार जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. काउंट का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा, 1 + 1 2 होगा. जब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा j.count, it is printing you here 2. Okay, so now I execute this program, then it will display you. Sorry, I am not removed this part, 1 and 2. So it is showing you 1 and 2. Now I remove the static here. So
If I remove the static here, then automatically what happened? The variable value is reinitialized. It is reinitialized again and again. We're removing static. So when I write static exi equals to new static ex, so object is created. When object is created, then constructor is called. When constructor is called, it is increment the value to 1, count plus 1. The default value of count is 0. So 0 plus 1 is 1. So it is printing you 1. Then when I am creating another object, then again it is reinitialized. So when it is again reinitialized, it is showing you again j dot count. Okay, again it is showing you j dot count. So again it is reinitialized. It is showing you 1. So if you remove static, again and again, your variable value is reinitialized. Clear? Yes, sir. Faizan? Yes, sir. Ankita? Yes, sir. Abhishek? তার जो static x i ଆଉ static x j সেটা কোন অবজেক্ট আপন নেই যে Static ex I टा हैला ऑब्जेक्ट और j टा हैला ऑब्जेक्ट हैला নলে ସବୁ সেম ହେଇଯିବ हाँ सेम है जो okay and there is a question means why or how why or where we are using it. Suppose if I am giving you a tax that you have to count the number of student is applying what seat for a college. Okay, if you define instance variable, तो every time what happen, जितना बार जो क्या होगा ना स्टूडेंट अप्लाई करेगा उतना बार वही एक दिखाएगा. आप काउंट नहीं कर सकते हो कितना स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे. बट यहाँ पर स्टैटिक डिफाइन करने से क्या होगा, जितना बार जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किया वो काउंट करके करके दिखाएगा. हाँ, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इज दिस, so total number of student applied for this job is this number. अगर इसको आप डिफाइन नहीं करोगे देन ये आपको एरर शो करेगा. एरर नहीं है, इट इज काउंटिंग फ्रॉम द 1. हर वक्त आपको 1 दिखाएगा. जहां पर आपको काउंटिंग करने का जरूरत है, टिकट काउंटिंग, नंबर ऑफ पीपल्स अप्लाइड फॉर द जॉब, हाउ मेनी पीपल्स आर अप्लाइड फॉर द what how many students are casting the, how many people are casting the votes. So in that sector we are using this type of program, static variable. Clear? So one question suppose I have got, how we know the constructor in this program. Constructor name and class name is always same. So if you notice here, class name is static ex and your constructor name is static ex. So that constructor name and class name is always same. So from the same name we can know that it is a constructor. And another special functionality for the constructor is what? It doesn't having any kind of return type. Function is having a return type like void and all the part, but the constructor is a special type of method which is not having any kind of return type. Okay, Faizan? Yes, sir. Okay. Any other doubt or question? Okay, No, sir. so next part I will move now.
Then working with operators, so now I come to the so what are the operators are available. An operator is a special type of symbol which is used to combine one or more operand. So here your x and y is called as the operand, plus is called as your operators. The operators and the operation that you have to do with a variable, that is called as the operand, and this plus operator, you can say it is called as your plus is your operators. There are different type of operators are present in Java. One is your arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, unary operator, bitwise operator, shift operator, and ternary operator. So here 8 type of operators that we have in the Java: arithmetic, assignment, comparison, logical, unary, bitwise, shift, and ternary. Now in arithmetic operator we have like plus, minus, multiplication, division, and modulo. Basically modulo is used to showing the remainder part. Plus, minus, multiplication, division, that you already know in the other programming. Plus for adding, minus for subtracting, star means for multiplying, then division, then modulo means it's showing you the remainder part, which is showing the remainder part that modulo we are using. And now we come to the assignment operator. Assignment operator work is to assign a value to a variable. After defining a variable, you have to assign some value to a variable. For assigning a value to a variable, we are using here equal symbol. If you say here, if you notice here, you can say here a is equals to 5. It is called as the assignment operator. The assignment operator. You can say it is called as the simple assignment operator. Some assignment operator is present which is called as the, you can say it is a complex assignment operator. So in complex assignment operator, you have to pass here like a is equals to a plus equals to 1,
or a plus equals to b. That means what? A is equals to a plus b. It is a complex assignment operator. You can say complex assignment operator. A is equals to a plus b, a plus